Orieli has been approached by a customer who would like a special job to be done for him and who is willing to pay $22,000 for it. The job would require the following materials. Fair? तो हमें कस्टमर की तरफ से एक अप्रोच हुई है who wants us to do a special job. उस जॉब को कंप्लीट करने के लिए हमें 4 type of materials चाहिए. So these are A, B, C and D. Material A के हमें 1000 यूनिट्स रिक्वायर्ड है जिसके हमारे पास ऑलरेडी इन्वेंट्री में कोई भी यूनिट्स मौजूद नहीं है. बुक वैल्यू यानी जितने में हमने खरीदे थे वो 0 है. रिलाइजेबल वैल्यू यानी आज अगर हम इनको बेचे तो कितने के जाएंगे. ऑब्वियसली जब हमारे पास है ही नहीं तो हम बेचेंगे कैसे और कितने में बेचेंगे. एंड द थर्ड वन इज रिप्लेसमेंट कॉस्ट कि आज ऐसे न्यू बाय किए जाए तो कितने के मिलेंगे. सो वी हैव गॉट 3 इंफॉर्मेशंस. बुक वैल्यू जितने में हमने बाय किए थे. रिलाइजेबल वैल्यू जितने में आज उनको सेल किया जा सकता है. एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट जितने में आज ऐसे न्यू बाय किए जा सकते हैं. सो मटेरियल ए कि हमें इस जॉब के लिए 1000 यूनिट्स चाहिए होंगे जिसमें से हमारे पास ऑलरेडी कोई भी यूनिट्स मौजूद नहीं है. कितने में खरीदे थे ऐसी भी कोई डेटा नहीं है. आज बेच भी नहीं सकते क्योंकि हमारे पास है नहीं. और अगर बाय करेंगे तो $6 का मिलेगा. रेलेवेंट कॉस्टिंग में हमने इस बात को देखना है कि हम इस कस्टमर को ये मटेरियल कितने का लगाएंगे. तो सबसे पहले हमें देखना है कि क्या हमारे पास ये मटेरियल ऑलरेडी इन्वेंट्री में मौजूद है या नहीं. ऑब्वियसली द आंसर इज नो. हमारे पास इसके कोई भी यूनिट्स मौजूद नहीं है. तो अगर हम इस कस्टमर की जॉब के लिए एक्सेप्ट करते हैं तो हम मटेरियल ए के 1000 यूनिट्स कहां से लाएंगे. ऑब्वियसली वी नीड टू बाय फ्रॉम द मार्केट. ओके. देन इज मटेरियल बी. मटेरियल बी के इस जॉब के लिए 1000 यूनिट्स रिक्वायर्ड है out of which 100 units are already in inventory. वो 600 यूनिट्स हमने $2 में बाय किए थे. आज अगर हम उनको बेचेंगे तो $2.5 पर यूनिट के हिसाब से इनको हम सेल कर सकते हैं. अगर के मार्केट से न्यू खरीदने पड़ेंगे तो $5 का एक मिलेगा. मटेरियल सी के 1000 यूनिट्स चाहिए जिसमें से 700 यूनिट्स हमारे पास ऑलरेडी इन्वेंट्री में मौजूद है. हमने ये $3 पर यूनिट के हिसाब से बाय किए थे. आज अगर हम बेचे तो 2.5 के हिसाब से बिक सकते हैं. या अगर आप नए यूनिट्स खरीदना चाहेंगे तो मार्केट से $4 के हिसाब से एक न्यू यूनिट आपको मिलेगा. डी के 200 यूनिट्स चाहिए और 200 यूनिट्स ही आपके पास मौजूद है. हमने इसको बाय किया था $4 में. आज अगर हम रियलाइज करना चाहें, सेल ऑफ करना चाहें तो $6 में इसको सेल कर सकते हैं. अदरवाइज अगर मार्केट से न्यू बाय करना चाहें तो $9 का मिलेगा. हमें क्या करना है, हमें इसकी रेलेवेंट कॉस्टिंग के हिसाब से बताना है. कि इसकी कॉस्ट हमें क्या पड़ेगी. ठीक है. तो व्हाट वी आर सपोज टू डू, वी हैव गॉट ओरियली कंपनी. और इसके लिए वी आर सपोज टू कैलकुलेट द रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल. पहला मटेरियल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द जॉब is material A. Next required is material B. C and D.
So in order to calculate the relevant costs, we need to know कि ये जो यूनिट्स आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, ये रखे हुए हैं या पड़े हुए हैं, लाइक हमारे जरूरत में है या नहीं. So coming over the first material, that is material A. Material A के कितने यूनिट्स इस जॉब के लिए चाहिए, 1000, और उसमें से हमारे पास ऑलरेडी इन्वेंट्री में कितने हैं, कोई भी नहीं. तो इस जॉब के लिए जो 1000 यूनिट्स आपको चाहिए, ये आप कहां से लाओगे? What do you think would be relevant cost of material A? Relevant cost of material A. Manahil says it's $6. Saad and Sara says it's $6,000. Correct. So since we don't have any quantity available in inventory, we need to buy all 1000 units from the market. So the relevant cost of material A would be 6,000. Done ho gaya. Next, material B. We need 1000 units, 600 out of which are already available in stock. वो जो 600 units थे, we bought them for $2 per unit. अगर वो 600 units हम आज मार्केट में सेल करें तो we'll be getting 2.5. But if you go for buying all new units, you'll have to pay $5 replacement cost. तो हमें ये देखना है कि जो 600 units आपके पास ऑलरेडी इन्वेंट्री में है, क्या ये हमारे काम के हैं या फारिग है. So reading down, it's material B is used regularly. Material B is used regularly by O'Reilly, and if units of B are required for this job, they would need to be replaced to meet other production demand. अगर हम इस कस्टमर की जॉब में हाथ नहीं भी डालते तो मटेरियल बी तो हमारे पास वैसे ही यूज में रहता है, ये तो हमारे काम में आ जाएगा. अगर आप ये 600 यूनिट्स यहां पे इस्तेमाल कर लेंगे तो हमें दोबारा ये 600 यूनिट्स बाय करने पड़ेंगे, बिकॉज अदर प्रोडक्शन डिमांड में इसकी रिक्वायरमेंट है. मनाहिल की तरफ से मेरे पास आंसर आ चुका है. बाकी स्टूडेंट्स बताएंगे कि व्हाट वुड बी रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल बी. फिर तो 600 यूनिट्स क्योंकि हमारे रेगुलर यूज में है, अगर हम इस कस्टमर को 600 यूनिट्स दे भी देते हैं, we'll have to buy new one. तो रेलेवेंट कॉस्ट में हम देखेंगे कि अगर आपके पास मौजूद यूनिट्स रेगुलर यूज में है या आपके काम के हैं तो हम उनके ऊपर बुरी नजर नहीं डालेंगे. अगर आपको इस जॉब के लिए, किसी भी पर्टिकुलर जॉब के लिए यूनिट्स चाहिए तो आप बाय कर लें. फिर सारा, सो 2000 वुड नॉट बी रेलेवेंट बिकॉज अवल तो हमारे पास 1000 यूनिट्स तो है ही नहीं. दूसरी बात, बुक वैल्यू हमेशा इररिलेवेंट होती है कि आपने जितने में बाय किया, दैट इज ऑलवेज इररिलेवेंट. सो रेलेवेंट कॉस्ट वुड बी, we need 1000 units, and we must buy all these units from market. Coming forward, material C कि इस जॉब के लिए we require 1000 units. We already have 700 units in stock. We already have 700 units in stock जो कि हमने बाय किए थे $3 में. So to remember, $3 या जितने में भी आपने बाय किया था
That is always irrelevant because that is historical. Fair, that is historical कि आपने कितने में बाय किया था. We have got no concern with that कि आपने कितने में बाय किया था. What now? आगे कहता है कि मटेरियल C and material D are in inventory as the result of previous overbuying. ठीक है, इंडिकेटिंग कि काम की चीज नहीं है. So this is as a result of previous overbuying and they have a restricted use. Next, ठीक है, दो चीज बता दी. पहली बात तो ये ओवरबाइंग की वजह से है. दूसरा, ये कोई खास इस्तेमाल में भी नहीं आ सकते. No other use could be found for material C. Pausing here. No other use could be found for material C. What do you think should be relevant cost for material C? Okay, Manahan. So, क्या सीन है, जो 700 यूनिट्स हैं ये तो हमारे किसी काम के नहीं है. तो अगर आज हम इस कस्टमर की जॉब एक्सेप्ट नहीं करते तो आप इन 700 यूनिट्स का करेंगे क्या? सिंस आपके पास तो इन्वेंटरी में मौजूद है और आपके पास किसी काम के भी नहीं है और खरीदे भी आपने गलती में थे. तो अगर आप इस कस्टमर की जॉब पे नहीं लगाएंगे तो आप इनको करेंगे क्या? वी वुड रियलाइज सेल, करेक्ट. और आज अगर हम इनको सेल करते हैं तो वील बी गेटिंग 2.5. तो जैसा वहां से मिलना वैसा यहां से मिलना. जिद करने की कोई बात नहीं है रेलेवेंट कॉस्टिंग में. तो हम क्या लगाएंगे इसकी कॉस्ट, दैट इज 2.5 प्लस बाकी जो 300 यूनिट्स हमें चाहिए वो तो आपके पास वैसे भी नहीं है. अगर इस जॉब को आप एक्सेप्ट करते हैं तो इन 300 यूनिट्स का हम क्या करेंगे? Where would we get this 300 units from? Fair. We definitely have to buy from the market. और मार्केट में से अगर हम आज ये चीज उठाते हैं तो दिस इज कॉस्टिंग अस $4. Is it 2950 in total? Done. Last material required is material D. For this job, we need 200 units of material D and we already have 200 units of material D available in stock. खरीदे थे for $4. ये कहाँ दिया मुझे ना बताएं कि आपने कितने में खरीदा था. लेकिन अगर आज आप इसको डिस्पोज ऑफ करते हैं तो यू विल बी गेटिंग $6. अगर ऐसे ही न्यू बाय किए जाएं तो यू कैन बाय फॉर $9 each. Continue. Material C and D are in inventory as a result of previous overbuying and they have a restricted use. No other use could be found for material C, but units of material D could be used in an other job. Fine. Units of material D could be used in an other job as substitute of 300 units of material E. तो मटेरियल डी के जो यूनिट्स है ये मटेरियल ई के 300 यूनिट्स के सब्स्टिट्यूट के तौर पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं
which currently cost $5 per unit, of which the company has no units in inventory at the moment. What do you think would be better? Material D को आज मार्केट में बेच देना ज्यादा सुटेबल रहेगा, या उनको मटेरियल ई के 300 यूनिट से सब्स्टिट्यूट करना ज्यादा फाइनेंशियली फीजिबल रहेगा? अगर कंपनी इस कस्टमर की स्पेशल जॉब एक्सेप्ट नहीं करती, if we don't consider the current special job being offered by the customer, what alternative uses of material D do we have? We can either dispose of these 200 units at current realizable value, or these 200 units of material D can be used as a substitute of 300 units of material E. Company के लिए which option is more feasible? Disposing of in the market or substituting against material E? मेरे पास दो आंसर्स आ चुके हैं, waiting for further. Let's compare. अगर हम मटेरियल डी को डिस्पोज ऑफ करते हैं तो इसकी रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है? We have got 200 units and these can be realized for $6. Going for this option, the company can get $1,200 only. लेकिन अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो it says the 200 units of material D can be used as a substitute of 300 units of material E. And material E की cost is $5. अगर हम मटेरियल डी को ई की जगह पे यूज करते हैं तो we'll be saving $1,500. Which option is more feasible for company? Obviously, अगर हम इस स्पेशल जॉब की तरफ नहीं जाते तो we have an alternative use to substitute. Therefore, अगर हम इस कस्टमर की जॉब में ये मटेरियल डी यूज कर लेते हैं तो हम कस्टमर से कितना अमाउंट डिमांड करेंगे? Since we have got an opportunity to encash $1,500, करेक्ट रितेश, तो हम कस्टमर से चार्ज भी इसकी सब्स्टिट्यूट वैल्यू करेंगे, दैट इज $1,500. तो पूरी जॉब को कंप्लीट करने के लिए हाउ मच इज रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स?
Okay, so it's 15,450. Whereas the customer is ready to pay us how much? 22,000. So this job is acceptable on financial grounds. Fair. So the next topic we are heading towards is break-even analysis. Any idea what is break-even analysis? Anyone? Okay, the revenue equals to cost. It's correct. Break-even is basically a point where there is no profit or loss. Fair. So when the revenue are equal to the costs and the company makes no profit or no loss, that is referred as break-even point. Fine. Lekin, why do we consider this break-even point? This is basically part of risk analysis. Break-even से हमें पता ये चलेगा कि what minimum volume must be achieved. So this would be the minimum volume of sales so that must at least be achieved. और ये काम हम कब कर रहे हैं? We are doing this analysis in basically planning phase. So that we know in advance okay, how many number of units must at least be sold. If you believe that target is too high, इतने units तो नहीं हो पाएंगे, या it's too difficult to achieve that level, that means के that business would definitely be leading you to the losses. अच्छा, अब उसकी calculation की तरफ चलते हैं. Like you people are saying, revenue is equal to cost. जब हम revenue में से माइनस करते हैं variable costs only,
sales minus variable cost. This gives us contribution. Correct, Ritesh? Then contribution में से हम लेस करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट. अगर हम कंट्रीब्यूशन में से यानी रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट तो हो गया, ये हो गया कंट्रीब्यूशन. कंट्रीब्यूशन में से हम अब अगर कंपनी की फिक्स्ड कॉस्ट भी माइनस कर दे तो दिस वुड गिव अस प्रॉफिट और लॉस. अगर हमारा कंट्रीब्यूशन ज्यादा है एज कंपेयर टू फिक्स्ड कॉस्ट, विल बी मेकिंग अ प्रॉफिट. लेकिन अगर हमारी फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा है एज कंपेयर टू कंट्रीब्यूशन, तो विल बी मेकिंग अ लॉस. ब्रेक इवन पे which one should be greater? If you wish to achieve break even, contribution or fixed cost में से which one should be greater? As an example, अगर हमारा रेवेन्यू 500,000 है और अगर हमारी वेरिएबल कॉस्ट 300,000 है, तो हमारा कंट्रीब्यूशन 200,000 है. अगर हमारी फिक्स्ड कॉस्ट ग्रेटर है, इनफैक्ट इससे कम है, लेट्स से फॉर इंस्टेंस हमारी फिक्स्ड कॉस्ट 175,000 है. The difference between contribution and fixed cost is 25,000. What would you name this 25,000? As profit, correct? अच्छा, अगर हमारा contribution 200,000 है और हमारी fixed cost 230,000 है, so there is difference of 30,000. And how would you name this 30,000? As loss, correct? I'm asking कि at break even, out of contribution and fixed costs, which one should be greater? At break even, which one should be greater, contribution or fixed cost? And you do remember what is break even? Break even, no profit, no loss. Correct, Ritesh? Correct, Sarah, बिल्कुल दुरुस्त है. So at break even point, contribution must be equal to the fixed cost. So अगर contribution and fixed cost दोनों level हो जाते हैं, the company will be at a position of no profit and no loss. Example, आप पार्ट टाइम ट्यूशंस देते हैं and you get a certain number of students
जो कि आपको चाहते हैं कि हमें आप बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा दें, या लेट्स से यू आर एक्सपर्ट इन केमिस्ट्री या फिजिक्स और मैथमेटिक्स, लेट्स से, तो यू आर अप्रोच्ड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कि हमें आप 1 मंथ की ट्यूशन दे दें। आपने कहा कि आई एम नॉट फ्री इनफ, लेकिन व्हाट यू कंसिडर कि अगर हम उनको ट्यूशंस देते हैं तो यू नीड टू हायर सम स्टाफ, कुछ ट्यूटर्स हैं जिनको आप हायर करेंगे, जिनको आपने सैलरी पे करनी है 60,000 रुपीज फॉर द मंथ। उसके अलावा आप एक स्पेस रेंट पे लेंगे, से वो स्पेस का रेंट 10,000 है, और आपने यूटिलिटीज एंड इलेक्ट्रिसिटी या मिसलेनियस एक्सपेंसेस की मद में 15,000 पर मंथ और रिजर्व कर लिए। सो दीज आर all fixed costs that you would bear if you consider offering them tuitions। जब आप स्टूडेंट से चार्ज के पूछते हैं तो पता चलता है कि they can be willing to pay tuition fees of 7,500 each per month। और ट्यूटर आपको कहता है कि जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे आप मुझे पर स्टूडेंट 2,000 भी पे करेंगे। उसके अलावा आपने इनको कोर्स नोट्स देने हैं जिसकी कॉस्ट 200 रुपीज पर स्टूडेंट पर मंथ है। यू पर्सनली बिलीव कि अगर मैं ये ट्यूशन से स्टार्ट करूं तो शायद मुझे कुछ बच जाए और एक बिजनेस चल पड़ेगा। हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स शुड यू गेट एट लीस्ट टू कंसिडर दिस बिजनेस? आपकी कॉस्ट कितने स्टूडेंट्स पे कवर होगी? एनीवन? Mahal, the tutors you are hiring would be getting two remunerations। ट्यूटर्स को और जो एडमिन स्टाफ अगर आप रखते हैं फॉर डीलिंग्स, उनको हम 60,000 की मंथली सैलरी पे करेंगे, और डिस्पाइट ऑफ सैलरी tutors will also be getting 2,000 rupees per student per month।
So tutor has got double benefit. उसका एक amount fixed भी है और उसको कुछ amount variable भी मिलेगा, depends on the number of students. How many number of students must enroll? Waiting for your answers. Work out. How do we calculate contribution? It's selling price minus variable cost. This would be the contribution per unit. Then, since this contribution is dependent on each unit, so contribution per unit multiply by volume, the number of units we sell. This would be the total contribution. Fair Manahel, noted. और break even के formula पे you just said कि the total contribution is equal to fixed cost. So when the total contribution equals to fixed cost, that means contribution per unit multiplied by number of units, this would be total contribution, and this should be equal to the fixed cost. And this would be a point when you will achieve break even. Let's consider आपके business की fixed cost कितनी है per month? Per month हमारी business की fixed cost कितनी है? 85,000, correct. So the fixed cost is 85,000. And how much is your contribution per student? How much is your contribution per student? $5,300, one answer. 9,700, Saad. Contribution. You'll be charging students 7,500. The teacher will be getting 2,000 rupees from that. And you also have to provide the course notes costing 200 rupees per student. So Saad, this 2,200 is not your additional revenue. This is not your additional fees. This is not you will be getting. This is what you'll be paying. How do we calculate contribution as selling price? In this case, we are charging every student 7,500 minus variable cost. We'll have to pay 2,000 rupees to student. Sorry, tutor. And 200 rupees
Cost of course notes. How much can we save from each student? Anyone else? How much is contribution? 5,300. Fair. Since you have to ensure contribution of 85,000 rupees, we are making 5,300 from each students, but we are not sure about the number of students. How many number of students must you have? हम क्रॉस करेंगे 85,000 divided by 5,300. What's your answer? It's 16.03. Okay. Keep this rounded up. We need at least 16 students to cover our fixed costs. So what is 1,600 students? Sorry, 16 students. It's break even volume. This is break even volume. How did you calculate this? वैसे तो हमारे पास एक प्रॉपर लॉजिक है इस चीज की, लेकिन चले इसका फॉर्मूला बना लेते हैं. फॉर्मूला हमने क्या बनाया? The break even volume is equal to fixed cost. fair, जितनी भी हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है उसको हम डिवाइड करेंगे by the contribution per unit. We'll be getting the number of units to cover the fixed cost. Right. मना है बिल्कुल ऐसा ही है, आपने फॉर्मूला बना लिया था. तो एक होता है ब्रेक इवन वॉल्यूम और दूसरा हम इसमें कैलकुलेट करते हैं ब्रेक इवन रेवेन्यू, जिसको हम कहें ब्रेक इवन इन करेंसी. How can we get this? This is simply break even volume multiplied by selling price. Okay, so what is exactly this 16 students representing? कि अगर आप ये ट्यूशन सेंटर स्टार्ट करना चाहते हैं तो you will have to research and ensure that you must at least be getting 16 students. अगर आप ये समझते हैं कि 16 students are too high, इतना तो नहीं हो पाएगा, और अगर हम ऐसा कोई ट्यूशन सेंटर स्टार्ट करते हैं तो 8 से 10 स्टूडेंट्स हमारे पास आ सकते हैं,
So stop considering this as a business because you'll ultimately be at a loss. लेकिन if you believe के यहाँ पे population बहुत ज़्यादा है and ऐसा कोई tuition center भी नहीं है, we have got plenty of inquiries और हमें लगता है कि we can get at least 25 students every month. तो आपका तो 16 students पे खर्चा बाहर है. If you believe that you can make more than 16 students, this business is very profitable for you. But if you believe that the target of 16 students is too difficult, too high to achieve, too hard to achieve, so that means कि आपका business fail जाएगा, उसके loss करने के chances बहुत ज़्यादा है. So break even volume multiplied by selling price. This would be break even revenue. How do we calculate break even volume? We have just discussed. Fixed cost divided by contribution per unit. We got the sales volume, break even volume, and we'll be multiplying that by selling price. This would be break even revenue. Fair? So in this case again, the fixed cost is 85,000 rupees. Divided by contribution per unit is 5,300. We got the number of students multiplied by selling price. हम हर स्टूडेंट से कितना चार्ज कर रहे हैं? 7,500. Hansa, there is no difference. The following one is explained. Break-even volume is calculated by fixed cost divided by contribution per unit multiplied by selling price. तो अगर आप directly volume रखते हैं, which you have calculated earlier as 16 students, so simply multiplying 16 students by 7,500, you'll be getting same answer. So it's 1,20,283 rupees. As per SAD. So if the business makes monthly revenue, monthly collections of 1,20,283, the business will be operating at no profit or loss. Whereas the answer of 16 students was the number of students, and 1,20,283 is revenue in rupees, in PKR, in currency.
Say for instance, a company is considering launching an outlet, and हमारी जो monthly cost होगी that would be 1,300,000 every month. Selling price point 5% Khansa, I cannot understand this. I'm telling कि 5% हमें sales commission देनी है अपने sales staff को. Okay, so let's solve this. Breakeven volume के लिए we already have its fixed cost and we need contribution. How much would be selling price of product P? $1,300. माइनस उसमें से हम पे करेंगे कमीशन. कमीशन हमने कितनी पे करनी है? कमीशन इज 5% ऑफ सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस इज 1,300 और उसका 5% कितना बनेगा? 65. फेयर सारा. तो कंपनी जब एक यूनिट सेल करेगी ऑफ 1,300,
Out of that, 65 rupees will be paid to sales staff. उसके अलावा इसकी वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है? 435. तो अगर एक यूनिट हम 435 का खरीदें, 1300 का बेचें और उस पे 65 की कमीशन पे करें, तो बाय सेलिंग ईच यूनिट हाउ मच शैल वी बी सेविंग? साथ ने बताया है इट्स 800. So the contribution expected by selling each unit is 800. How much is fixed cost? It's 1,300,000 divided by 800. 1,625 units. So if the company is able to sell 1,625 units every month, this would be point at which there will be no profit or no loss. And अगर हम break even revenue calculate करना चाहें, we have got break even volume of 1,625 units multiplied by how much would be selling price for each unit? How much is expected revenue? Fair, 2,112,500. ओके, एक और तरीका है, इनफैक्ट एक रेशो कैलकुलेट किया जाता है जिसको हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो. या इन शॉर्ट हम इसको कहते हैं CS रेशो. How can we calculate the CS ratio? This is simply contribution per unit divided by selling price per unit. Referred as CS ratio. Okay, fair. Saad, in this case, our contribution was 800 rupees
and the selling price of 1300 rupees multiplied by 100, is it 61.5%? Okay, 61.54%. बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, एक पार्ट बन रहा है वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो, दूसरा बन रहा है कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो. लाइक आउट ऑफ 100, अगर 61.54 का कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो है तो 38.46 कॉस्ट है. दोनों का बेस सेम है. दिस इज 800 आउट ऑफ 1300 and how much is variable cost? That is 65 plus 435. 500. So 500 out of 1300 is variable cost to sales ratio. Okay, so twisting it mathematically, you can see break-even sales हम कैसे निकालते हैं? It's break-even volume. And how do we calculate break-even volume? That is fixed cost divided by contribution per unit. We'll be getting the break-even volume here and multiplying that by selling price. Like we have done above. कि हमने fixed cost रखी 13 lakh rupees divided by 800. We got the break-even revenue volume of 1625 units. उसको multiply किया 1300 rupees से. तो ये आ जाता है ब्रेक इवन सेल्स. मैथमेटिकली ये सेलिंग प्राइस यहाँ पे न्यूमरेटर है. अगर मैं इसको उठा के यहाँ पे डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर पे डाल दूं तो फॉर्मूला रिवाइज हो जाएगा एज फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय
कंट्रीब्यूशन और सेलिंग प्राइस जो कि पहले न्यूमरेटर है, इसको मैं उठा के डिनोमिनेटर पे डाल देता हूँ. कंट्रीब्यूशन इज ऑलरेडी डिनोमिनेटर और उसका भी डिनोमिनेटर बन जाएगा सेलिंग प्राइस. So mathematically, this is proven that denominator का denominator is acting as a numerator. And this formula is basically CS ratio. अप्लाई करके देखते हैं. इस क्वेश्चन के अंदर फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? 1 million. $300,000 divided by CS ratio जो आप लोगों ने मुझे बताया that is 61.54%. मैं इसको डायरेक्टली डिवाइड कर लेता हूं. $61.54%. What is answer? It's 2,112,500. This is my break-even revenue. Fair? कोई confusion नहीं है? Let's try the same for above example जो कि हमने ट्यूशंस के केस में की थी. इसमें हमारा कंट्रीब्यूशन कितना था? 5,300 and selling price कितनी है? 7,500. How much is CS ratio? Contribution of 5,300 divided by selling price of 7,500 into 100. साथ ने आंसर दिया है 70.67%. Fair. It's 70.65. Sara. Fair. तो हम ब्रेक इवन रेवेन्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? फिक्स्ड कॉस्ट that was 85,000 rupees in that case divided by 70.67%. That is CS ratio. What answer are we getting? $120,277. ठीक है. You can see it's very close to this. जो ये 4-5 रुपए का डिफरेंस है, that is because of the roundup. हमारी जो परसेंटेज में CS रेशियो है, that is 70.66666.
जिसको हम राउंड अप किया 70.67% पे। तो वी हैव गॉट बोथ वेज, हम इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। करेक्ट। साथ अगर हम राउंड अप नहीं करते, एज इट इज फिगर पकड़ते हैं, तो विल बी गेटिंग द सेम आंसर। Okay, so if we are considering launching a product जिसकी annual fixed cost will be 2,800,000, एक यूनिट को बनाने का खर्चा 380 आएगा और हमारा कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो 60% होगा सेलिंग प्राइस का। आपने बताना है कि हमारा ब्रेक इवन वॉल्यूम और ब्रेक इवन रेवेन्यू कितना होगा। वेटिंग फॉर योर आंसर्स। ओके, इस क्वेश्चन में देखिए टेक्निक क्या है कि मैंने आपको सीएस रेशियो बता दिया है। अगर कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो 60% है, तो हाउ मच वुड बी वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो? अगर सेल्स रेवेन्यू का 60% कंट्रीब्यूशन है तो वेरिएबल कॉस्ट कितना परसेंट होगी? फेयर? 40%? अंडरस्टूड? कि अगर सेल्स रेवेन्यू का 60% कंट्रीब्यूशन है तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? 40%। और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? 380, जो कि सेल्स रेवेन्यू का 40% है, तो उसको हम ग्रॉस अप करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 40, तो सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी? वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट इज 380, that is 40% of selling price. So how much would be selling price? 950 rupees. Fair. तो अगर 950 रुपीज हमारी सेलिंग प्राइस है तो हमारा कंट्रीब्यूशन कितना होगा? ठीक है, तो सेलिंग प्राइस 950। अगर आप चाहे तो इसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दें, दैट इज 380, या फिर इसका डायरेक्टली 40% 60% निकाल लें तो भी चलेगा। दैट इज कंट्रीब्यूशन 570। नाउ वी हैव द डेटा। फिक्स्ड कॉस्ट 28 लाख है, 28 लाख डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन इज 570। 4912.3 फेयर।
units. So this is our break even volume. और अगर हमें break even revenue चाहिए तो या तो हम इसको simply we can multiply this by selling price, or we can use that CS ratio technique. Fixed cost divided by CS ratio, that is 60%. $4,666,067 fair. 4,666,667. ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? फिर अभी हम अटेंडेंस की तरफ मूव कर रहे हैं और उसके बाद मैं आपका टेस्ट स्टार्ट कर रहा हूं.